करता हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करी और अपनी नॉलेज हमारे पार्टिसिपेंट्स को शेयर करने के लिए हमारी हमारे जो शेयर करी नॉलेज शेयर करने के लिए एक्सेप्टेंस दी, के लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारे बीच में पीपी पारिक साहब हैं जो बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ। Sir, it's always pleasure to be with the Thank you, colleague sir. brothers and intelligent and knowledgeable brothers and sisters both. आप सभी का स्वागत है। आज हमें ऋषभ जी बताएंगे अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल्स इन वेल्थ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। इस बारे में हमें बताएंगे विस्तार से। वो इसके बहुत बड़ी नॉलेज रखते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं आप सभी का एक बार स्वागत करते हुए और रतन जी को माइक देते हैं। रतन जी, आगे की कार्यवाही शुरू करें। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। हमारे साथ में मेरे ख्याल से हमारे जो को होस्ट है शैलेंद्र अग्रवाल जी और संदीप अग्रवाल दोनों नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी कार्रवाई में। और मैं निवेदन करता हूं कि जैसे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया, हमारे आज के जो स्पीकर है ऋषभ राजवंशी जी, इन पास्ट ही इज ए बैंकर और अभी 20 सालों से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है। लेकिन मुझे बहुत थोड़ा सा ज्ञान है और मेरी वाणी में इतना ताकत भी नहीं है कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं अतुल मान सिंह जी से कि वो ऋषभ जी को इंट्रोड्यूस करे, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करे आज की हमारी ऑडियंस। अतुल मान सिंह। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अतुल मान सिंह का। आज का हमारा टॉपिक में अपॉर्चुनिटी इन वेल्थ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट टू द प्रोफेशनल्स। उसके लिए हमारे पास एक स्पीकर है मिस्टर ऋषभ राजवंशी जी, जो कि इस फील्ड के अंदर पिछले 20 साल से। उनका एक ब्रीफ बायोडेटा जो हमारे पास आया, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मिस्टर ऋषभ राजवंशी began his career in the year 2004 as a management trainee and then evaluated to the portfolio management Imperial Banking with the HDFC Banks. During the 8 years of his tenure, Mr. Rishabh has worked on the different portfolios and also awarded as the key employee with the grant of the ESOPs. He left HDFC Bank in the 2011 and moved as a wealth manager with Axis Bank Bulgari segment. His last assignment as an employee was with Kotak Mahindra Bank, which includes managing all the regional channels of the branch banking, that is retail, wealth, and assets. He owns 17 years of amazing career in the banking and the private wealth management before founding his own wealth management company, 3.Fintude. Mr. Rishabh holds a qualification like BCom, MBA, CF, GP. Mr. Rishabh is passionate for writing short stories on the wealth management and behavior aspect of the investors, and also write periodically for the Times of India newspaper. Currently, he is managing assets in the tune to 200 crores in all portfolios, that is bonds, mutual funds, PMF, PIF, health insurance, and term insurance. Over to Ratan ji. Thank you, Atul ji. Great to have the Rishabh ji. Rishabh ji, before I call you for deliberations, आज हमारे साथ बड़े स्पेशल पर्सनालिटी जुड़ी हुई है जो हमारे पास में सेंट्रल काउंसिल मेंबर रहे हुए हैं एंड वेरी प्राउड पर्सनालिटीज है हमारे लिए। पीपी पारिक साहब, मैं चाहूंगा दो सब पारिक साहब जरूर हमारे लिए आशीर्वचन के लिए कहें, हमारी गाइडेंस के लिए कहें। पारिक साहब प्लीज। Good afternoon, Goel sahab. First of all, I am short of words to express my gratitude for the affectionate words which you have given to me. We all are one, and I have learned a lot with all of you people who are doing a great service to the profession at large and to the members in general. I am not very regular in joining your deliberations, but as and when I get the material thereafter, then I feel bad that I should have joined it. So I am short of words to express my gratitude, and I thank you all for giving me this opportunity. And after a very long period, or rather years, I am joining this occasion, and I thank all of you for
giving this love and affection to me, and किसने कर दी? तुमको लड़की requesting you to continue to that, and I think we can you can start openings, and I would be सर आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। मैंने सबको म्यूट किया हुआ था, आप अनम्यूट करिए थोड़ा सा। पारिक साहब प्लीज। सर अनम्यूट करिए अपने आप को। अब हो गया? हाँ हो गया सर, बिल्कुल। पहला जो मैंने बोला नहीं सुना, तो मैं वापस से स्टार्ट करूं? नहीं सर, ठीक है। So with this Don't words, take it as right. I think we should start the deliberations. Right. Everybody's time is very precious, and the very intellectual gathering is there on this conference. And let us start. You can take the chair, and Ratanji, to start the thing, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for your. Pleasure is mine. I'm feeling very good about. Really, we are also. It is a great honor for us to be with you. Anyway, amongst the brothers, we are praising each other. Right. We both are great for that. Right, sir. Thank you. Rajvanshi ji, please. Rishabh Rajvanshi ji, I'll request you to kindly have your start your deliberations. Rishabh ji, please. Rishabh ji. Yeah, hi. Yeah, please. So kindly start your deliberations. Good evening, everyone, to all the respected members of Rtca, all the chartered accountants and tax consultant on this forum. It is an amazing moment for us to be here on this platform because we are two founders of this company, me and Kamlesh. So when we were discussing about this presentation, so we were like, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे. In last 15 minutes, it is actually, gave us a feeling that, the big people, the learned people are here on this platform, and the nervousness is there, but still we will try our level best to make the things better, and for better understanding. So with this, we start. First of all, I would like to, convey my heartfelt thanks to Satish Gupta, CH Satish Gupta uncle, and Ratan Goyal sir, Vinay Jolly sir, Atul Mansinka sir, and PP Parik, PP Parik Mama ji. And I could also see Ashok Jain sir, with whom we are known to. So it's really amazing that we could see that some known faces are also there on this platform. And everyone, wishing you a very happy Diwali once again. It is why it is so much important for me personally, because 24 years back when I used to go to Jalana Dubri for my CA foundation, I passed in 1998 my 12th, and then I immediately joined CA foundation course. 2 times I attempted, and then immediately my dad said कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा ये, इसको छोड़ दो. तो आज 24 साल बाद लग रहा है कि ठीक है, मतलब एटलीस्ट मैं उस सर्कल में मूव कर पा रहा हूँ, जो इतने लर्नेड और इतने, जैसे कहते हैं ना कि टाइटल वाले लोगों के साथ भरपूर है. So it's really an amazing moment. So coming to this, what is that thing which brought us here on this side of table? So when we spent good time, almost 15-16 year plus in banking, as sir has already introduced our kind of CV with all of you. In 2014, one very casual day, me and Kamlesh were sitting in bank, and we started discussing that we should start something on our own, because we are being biased. Biased means like bank always try to pitch in something to us, so that we have to put some kind of push to our clients so that the products can be sold. So with this thought, we started thinking that this is not the right and correct approach. And trust you us, it took 3 years to be here on this side of table, because we actually discussed these certain points with our clients, that how things are moving and how you all are feeling.
when we place the products in front of you. So everyone was like, yes, pressure is there, and we actually don't like, but करना पड़ता है because they have got their business banking with the banks, primary banking with the banks. तो उन सब चीजों के चलते हुए ये सब चीजें फिर हमने करी, and then we finally started. So this is one of our founded company which me and Kamlesh founded. So categorically, this presentation would be containing three parts, and one is the technical and scientific approach towards wealth management. That is first part. Second part would be fundamental and product side, which would be taken care by my colleague Kamlesh, right? And a third segment would be question and answer session. So we would try to cover up all the available aspects which are in our good knowledge and best available information available to us as per the SEBI guidelines, right? So this is how things started. So this is our company 3.22, as you can see the second slide. So we try to cater the individuals, companies, corporates, institutions, and trusts who all are looking for some kind of advisory on funds, on money, right? Which is actually, there is still there is a depth of good people who can actually give a sensible advice to the people who are all looking for that, right? So with this thought, we come up with this company called 3 Dots Finitude, wherein the 3 dots are, first is you. You means like client. We as a team, and wealth as a concept, so that we can create some and add some kind of addition to your existing money. Why we are different, as you can rightly see in front of your slides, we are actually unbiased in our approach, because we cannot lose the clients have got 100 options, but we as a wealth management company, we do not have the option but to retain our clients. So now suppose if we give any kind of advisory today to any of the client, 2 years down the line the client can come up and say that this is something which is not good in our portfolio. We would be having very tough times to answer that, right? So this is why, as you can see, that we are fearless. Fearless means if something is not as per our recommendation, we don't in fact approve that particular investment strategy. We are undoctored, so we do not do कि हर बंदे को एक ही तरह का स्ट्रैटेजी देना है, एक ही तरह का फंड्स देना है, या एक ही तरह का प्रोडक्ट देना है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. हार्ड क्राफ्टेड मीन्स दैट वी इन्वॉल्व human side also in our approach, that you will see in coming pages of this presentation. So coming to this, first of all, let's try to understand the market dynamics. It is not actually related to wealth management, but market as a whole. As you can see, the first point, when an industry is new, distribution is the king. ये चीज, I don't know. I mean, Ratan sir, if I can ask some of them, or someone can add something to this point. When an industry is new, distribution is king. Right. इस बात का मतलब कोई अगर मतलब बताना चाहे, मतलब we would really love Audience to. chat box is open. You can write to chat box also. Correct. So we have got our colleague Rtca with us, so who would be taking, and we have got Siddhant Mishra also, Shivam Arora also, who would be pen down the notes. So let's not confuse ourselves with this. When an industry is new, distribution is king. What is it? Anything when come up in the markets, distribution is king. We can take the examples: innovation, technology. Can we relate the examples of Netflix? Can we relate the example of Zomato, Uber? What these people are doing, these people are doing the innovations. These people are using the technology, and since they are new to the industry, and hence they would be able to enter into the new geographies, right? And they really dominated the markets. They have actually developed themselves as disruptors in the market. किसको पता था कि पिक्चर हॉल में जाने वाले लोग बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी. किसको पता था कि मेरे घर पे मेरा लैपटॉप छूट गया है, मेरा चार्जर छूट गया है,
तो मेरे पास उबर का एक बंदा है जो मेरे लिए ये सब काम कर सकेगा, right? We have got Zomato, we can have food at our place. So these are the disruptions in the technology which these companies have come up with. Now coming to the second point, when clients get awareness, product is king. Now I hope you can make out what I'm trying to say. अब क्या है कि क्लाइंट को थोड़ा पता लग चुका है, उसको अवेयरनेस हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, और क्लाइंट ने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया. how things are, how things are moving, what technology is, right? And what are the geographies, the existence of the products in which geographies there. In this particular segment, I would mention that auto sector, mobiles. See how iPhone, Apple as a company has developed, emerged themselves. I mean, see, they have knocked off. They have knocked off lot many companies. Samsung is still struggling, although they have got good market share, right? But see how they are coming into the markets, new geographies, and people have got awareness that what kind of cameras is there, what are the features into this particular phone. But yes, उन्होंने उसी तरह के फीचर्स को ऐड करके उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया, राइट? उनकी नीड्स को और उनकी अवेयरनेस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया, एंड हेंस दे केम अप विद द प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट वहां पे किंग की तरह उसने रोल प्ले किया. Coming to the third point, when product is commoditized, I hope everyone can understand that what commoditized means. When there is a very fine line difference between the services which we are rendering to our consumers, clients, right, buyers. बहुत मुश्किल है इस बात का फर्क महसूस करवा पाना कि हम जिस प्रोडक्ट में, सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसमें what are the difference, राइट? इसके अंदर हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया है दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट. यहाँ पे आकर के वी विल place our first word, that is wealth management, which is eventually the topic of today's Zoom meeting. Brand is king. वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोफेशनल, अपने अंदर एक डिफरेंस को क्लाइंट को फील करवा पाए, which is very much intangible in nature. मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट में पढ़ा था, there are two kinds of assets, one is tangible and intangible. ये जो फीचर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो चुका है, वहां पे वेल्थ मैनेजमेंट वुड बी वर्किंग एज किंग, जहां पे प्रोफेशनल को अपने आप को ये प्रूव करना है कि यस, how they are perceiving themselves in front of clients, right? So this is how, अब हमको ये पता चला कि मार्केट के डायनेमिक्स क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट कहाँ पे प्लेस्ड है, राइट? और उसके बाद क्लाइंट्स के जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर किस तरीके से चेंज होते हैं और किस तरीके से नए प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में आकर के अपनी जगह बनाते हैं, राइट? So with this, I would like to also mention that there is one more thing, that whenever we try to meet our target clients, right? Now I'm talking in perspective to wealth management. So we always try to push the things. This should not be the approach. What we try to do is, as here at Three Dots Finitude, we try to identify the problems. First of all, we need to identify what problem exists in his or her life with regards to money. उसकी प्रॉब्लम क्या है, एंड एवरीवन, ऑल रेस्पेक्टेड मेंबर्स, ट्रस्ट यू अस, वी एक्चुअली फॉरगॉट, वी एक्चुअली वी डोंट बिलीव दिस फैक्ट दैट हमको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमारे पास उसको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, राइट? एंड देन वी नीड टू गिव द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है, कि लास्ट 50 to 60 years में और अब लास्ट के 10-12 years में, क्या, what is that basic difference? There is a theory which is very much prevailing in today's time, and that is money in motion. 60 years में हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, that was close to 1300 USD, and this is the data which we have fetched from the resources very much available on the websites. In last 10 years, you would not believe
that this per capita income has increased to 2,400 USD. 1100 का इंक्रीमेंट पर कैपिटा इनकम में हो चुका है। क्या इससे किसी की लाइफ पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। People would actually look for the opportunities in the markets wherein they can invest this surplus money, right? Be it stock markets, mutual funds, bonds, insurance, etc., etc., right? अब हमको ये भी पता चल चुका प्रोडक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी भी पता चल चुकी है, और वेल्थ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल हमको कहाँ पे चिप इन करना है वो भी हमको आइडेंटिफाई हो चुका है। लेकिन उसमें और क्या डायमेंशंस हैं, और क्या साइंस है, और क्या टेक्निकलिटीज हैं, वो चीजें हम और आगे अब देखते हैं। ठीक है, so this is very interesting slide. As you can see that, control the controllable. As a wealth manager, we always, I'm talking as a generic बात अगर मैं करूं तो हम सोचते हैं कि हम है ना we let's behave or talk like a god कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे आपकी लाइफ में, but actually things are not like this. Actually it cannot be like this. What we can do is just try to analyze the person who is sitting in front of you. Try to fetch the details which matter him or her the most, right? Things which you can control, right? You means like you wealth manager, and mash that circles into two and find that shady area which we should focus upon. Are you understanding what I'm trying to say? आपको इसके अंदर ये देखना है कि हमको हमको सबसे पहले उस पॉइंट पे उस पॉइंट पे हमको फोकस करना है जो उसको मैटर करता है, राइट? उस पॉइंट पे फोकस करना है जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैन वी कंट्रोल? कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा आपसे 10 साल पहले एक इंडस्ट्री चल रहा था वीकेआई में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टेकिंग द एग्जांपल ऑफ जयपुर, तो वीकेआई में फैक्ट्री चल रहा था, अभी वो बंद हो गया है, अभी वो इनकम नहीं आ रही है, बट अब मैं क्या करूं? वी कांट डू एनीथिंग विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। वी एक्चुअली कैन नॉट डू इट, राइट? आपको उसके लिए यही करना है कि उन दोनों उन दोनों पाई चार्ट्स को मैच करके एक जो भी एक कॉमन एरिया डेवलप होता है उसको आइडेंटिफाई करना है, और उस पर वहां जाकर के फोकस करना है कि यस, दिस इज माय वर्क व्हिच आई कैन डू विद दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, राइट? With this, there is one more interesting slide. Now, see what I was talking just a minute back. So on one side, one pie is saying a client who is happy, who is healthy, and who is wealthy. On the other pie, there is an advisor who is, have got financial wellness processes, right? Can all your processes be helpful for any client? The answer is no. आपकी हर करीबी चीज को या उस चीज आपके जो एक्शन है उससे आपके हर क्लाइंट को उसका बेनिफिट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? यू नीड टू मैच अप द same common area wherein the client's happiness, healthiness, and wealthiness is maintained with your financial wellness processes, right? और उसके अलावा सबसे important part, wealth management is always not about creating some big numbers on client's portfolio. At times, and most of the time, mind you, I'm repeating it, at times and most of the time, we need to manage the anxiety levels of our clients when that particular clients are investing with us, right? किसी ने पूछा कि आज का मार्केट कैसा रहा, कैसा चल रहा है भाई, क्या हो रहा है, कैसा है, क्या किस तरह क्या बोल रहा है मार्केट? अरे मार्केट तो अपने हिसाब से चल रहा है, मार्केट इज गोइंग एट इट्स ओन स्पीड, मे बी अप और डाउन. I mean, how you are behaving when market going up or down, that is something which is important, right? So we need to take care of these things, because anxiety हमेशा कब आती है? वो इसलिए आती है because there are people who have been missold very heavily,
by the institutions. Institutions may be the people like us, the wealth management company, the banks, the national distributors, right? And agents जो हम लोगों के एरिया में होते हैं, अलग जगह हमको मिलते हैं. So this is the identification of the behavioral science. अब हमको ये भी पता चल गया वेल्थ मैनेजमेंट को थोड़ा सा डीप डाउन उतर के कि हमको किस पर्टिकुलर एरिया में काम करना है. Now coming to this, as you can see this picture, there is a lady standing, at one store, right? ये एक जैसे although मैं अगर इंडिया की बात करूं, yes, in certain cities like metro cities में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है. टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इतना ज्यादा अभी चिप इन नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दैट दे हैव गॉट द मेंटालिटी ऑफ स्टिल द ओल्ड किराने की दुकान वाला कॉन्सेप्ट. हमको किसी भी क्लाइंट के बिहेवियरल गैप को अगर जानना है तो उसके लिए हमको उसके साथ समय बिताना पड़ेगा. एज यू कैन सी दैट इट कैन नॉट बी टॉट इन स्कूल्स, राइट? And trust you me, you have got lot many channels, CNBC, G business and all. वो आपको एक जनरलाइज एडवाइस देते हैं कि ना इधर पैसा डाल दो, ये कर दो, ये मार्केट में अभी मत डालो, खराब हो गया है, इजराइल हो गया, रशिया हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? हमको सिर्फ और सिर्फ उसके जो बिहेवियरल साइंस है उसके ऊपर वर्क करना है कि इस पर्टिकुलर, जैसे अब लेडी एक डब्बा देख रही है कि है ना यहाँ पे कैलॉग्स का कोई डब्बा रखा हुआ है, तो हमको ये देखना है कि कैलॉग्स के पास में कौन सी चीज होनी चाहिए. अगर हम कैलॉग्स के पास में अगर हनी का बॉटल रख देंगे, it would be easier for this lady so that she can take the decision fast, buy this Kellogg cornflakes, right? She would add some honey and got burnt hands very badly in mutual funds, stock markets. उनको भी एड्रेस हमको करना चाहिए. कैसे? क्लाइंट्स के पोस्ट ऑफिस के पासबुक्स पड़े हुए हैं, वो अनअटेंडेड है कई सालों से, राइट? क्लाइंट्स का आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है. सो as you can see, there is a word called holistic approach towards clients, holistic approach towards solving any kind of issue which client is facing. ये जब तक हम नहीं करेंगे, believe you me, ये हम इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, वो क्लाइंट हमारा अपना पूरा नहीं होगा. हमको उसको पूरा, अगर हमको इफ यू रियली वांटेड टू हैव 360 डिग्री व्यू ऑफ हिज और हर पोर्टफोलियो, देन वी नीड टू हैव और वी नीड टू बिकम अ होलिस्टिक वेल्थ मैनेजर वेयर इन एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. उसके घर में अगर गाड़ी आती है ना, वो डिसीजन भी क्लाइंट को हमसे पूछ करके लेना चाहिए कि विच कार इज वेल suited in today's time, right? Now suppose if they are going to any holiday, they must be consulting with us. So it's not about the fashion thing what I'm talking about. It's about the approach, the kind of trust which you are actually developing gradually with your client and developing this relationship. So this is again, पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में हमको क्या करना है. इसमें हमने अभी देखा कि उसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, उसके टूल्स क्या हो सकते हैं, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. So this is the broad categorization, 2 areas of profession and processes, right? Now you can see the picture. There is an old lady, she's being surrounded by a lot many people of all age, all of all walks. She could have from her community or maybe outside the community, right? Everyone is just barging her with all the available informations they can give. But the problem is not being solved. Why? Because they are missing the process. What? Life planning and business planning. These are the two bullet points which one should understand, right? Why I'm not taking this retirement word currently? Because retirement is actually a very different thing, which we will obviously consider it in our coming slides. But broad categorization is life planning. I've got certain dreams as far as my business are concerned. How can you help? Right? So we have got solution to those problems also.
identification, broad categorization. So these are the two things which we have, identified, and we need to keep this thing in our mind while interacting with our prospective consumers. So coming to this retirement, that's why, I was not even talking on this point, because, it is actually a very different ball game altogether. In May 2013, there was one magazine from National Geographic issue. It was carrying one article: will the traditional 30 years of accumulation for 30 years of income distribution be enough? So what I mean to say is, if a boy or a girl starts his or her career into 23, 24, next 20, 30 years till say 53, 55, he or she works, and then immediately stops working, and then starts thinking that, from here on I would be, I would not be working, right? At least for money. Is it possible? क्या जो 30 सालों में मैंने फंड्स एक्यूमुलेट किए, would these funds be enough for my next 30 years? The answer may be yes, the answer may be no, because there is one very important point which you all must be very well aware of, that is called inflation. Trust you me, sarkari aakda is 6-7%. Sarkari aakda is 6-7% of inflation, which is actually don't exist at all. कहीं पर भी exist नहीं करता. The people like you and us having an inflation of more than 10.3%. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन्फ्लेशन को हम लोग हमेशा भूल जाते हैं. जो मूवीज हम देख रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स में हम खाना खा रहे हैं, जो व्हीकल हम चला रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल हम यूज कर रहे हैं, जो दूध हम जो चाय और अपने अपने बेवरेजेस में यूज करते हैं, और डे टू डे लाइफ में जो भी हम ग्रोसरी या फिर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, उनका जो मुद्रास्फीति वो 10% से ज्यादा है. टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज 10.3, राइट? तो क्या ये 30 साल कमाया हुआ पैसा आने वाले 30 साल में बहुत रहेगा क्या? The answer is no. The answer may be yes. We will learn that in our coming slides. Second point. Again, now, we are going deep down. We are going deep down how to identify the clients, how to identify their behavioral gaps, how to address their anxiety, right? We have already got our broad categorization, life planning and business planning, right? अभी हमको life planning भी पता चल गई, business planning भी पता चल गया. अभी हमको individuals पे, humans पे work करना है कि अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि the fit, what we are fit for. There is one line: realize that category you belong to will likely bias your handling of clients from other categories, because हर बंदे का अपना अपना एक expertise होता है. Everyone has got their own expertise. So to give a better picture, so there is a generation called baby boom, right? Everyone heard. So I can sense that we have got a lot from generation Y, which is generally also called as millennials, and generation Z, right? On this platform, if I'm talking about. What about generation which is called baby boom, who took birth 1942, 1959? ये वो जनरेशन थी जिन्होंने वॉर देखा था, राइट? उस वॉर को देख करके अपनी थियरीज डेवलप की थी. उन्होंने अपने आइडियल्स को चुना था कि ये बंदा या ये बंदी या ये पर्सन आइडियल है, और अपनी उसके बेसिस पे अपनी फिलॉसफी को डेवलप किया था. बहुत ही रिजिड, मतलब see, I mean, don't take me otherwise, but yes, they were having their own fundamentals on which they always be like this. They would not even take the flexible decisions when it comes to money. Coming to the next generation, which is generation X, capitalism, materialistic status. Believe you me, ये सच में बिल्कुल ठीक बात है. मटीरियलिस्टिक थी, अच्छे घर बनाना, राइट? इंडस्ट्रीज डेवलप करना. ये वो जनरेशन है जिन्होंने ना बिजनेसेस को एक नए
दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेकर के ये लोग गए, राइट। अपने स्टेटस का इनको बहुत वो रहता था कि भाई ठीक है हमको ये स्टेटस चाहिए, राइट। Coming to this next generation, why millennials? So I come from this generation because I took birth in 1981. Globalization, self-centered and experience. Yes, globalization I can relate to. यहाँ पे हम लोगों को ये पता चला कि ग्लोबली क्या चीजें हो रही हैं। यूएस मार्केट्स के बारे में धीरे हमको पता चला। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमें चाइना मार्केट्स के बारे में पता चला। सेल्फ सेंटर्ड, somehow I don't feel myself that I fit into this word. Experience, yes, they would like to experience certain things from their seniors who are in a bigger age, right? Coming to the fourth category, that is Gen Z. बहुत ही डिफरेंट ये जनरेशन है। अगर इनके पास आज की तारीख में, if they have got 25 lakh rupees, they will punch in one line, want to invest 25 lakh rupees in stock markets, give me the option, and trust you me, ये लोग पूरा ऑथेंटिक न्यूज निकाल करके लेकर के आ जाएंगे कि मार्केट में अभी क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। डिजिटल और सोशल प्रेजेंस को ये लोग बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। Why? Because they have been brought up in this kind of environment, right? I may differ with my thoughts, but I'm talking about the categorization to whom we are dealing with, right? Uniqueness. Why they are unique? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ये लोग बहुत डिफरेंटली कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग आज की तारीख में घर बनाना नहीं चाहते क्योंकि या तो इनको अपने पेरेंट्स से घर ऑलरेडी है, मतलब दे हैव ऑलरेडी गॉट होम। ये ऐसा सोचते हैं कि हमको क्यों घर बना करके अपने कैपिटल को ब्लॉक करना है, हम उसके ब्याज से हम उसके ब्याज से अपना किराया दे करके वाई टू ब्लॉक आवरसेल्व्स इन वन पर्टिकुलर सिटी। हमको उधर कल को दिल्ली रहना है या फिर बैंगलोर रहना है, पुणे रहना है, जयपुर रहना है। दे डू नॉट वांट टू ब्लॉक देमसेल्व्स, सो दे हैव गॉट सम यूनिकनेस इन देयर अप्रोच, राइट। सो व्हाई आई हैव पुट दिस so why I have put this slide here. We need to identify ourselves which category we are fit into, right? Now suppose if some of you may wants to cater some of the clients, so these are the four broad categorization when it comes to the age. And mind you, we need to mind the gap, we need to respect their individualistic, otherwise things may go haywire, राइट। रिलेशनशिप्स खराब भी हो जाते हैं एज अ वेल्थ मैनेजर, एज अ क्लाइंट आपके, राइट। सो दिस इज अगेन द ब्रॉड कैटेगराइजेशन which actually take to us to these 5 basic question in our mind. Which client segment I am best suited to serve, right? मेरे को क्या यंग लोगों के साथ ही डील करने में अच्छा लग रहा है बिकॉज दे टेक द डिसीजन फास्ट, बट हो सकता है कि उनके डिसीजन कई बार वेग हो जाए। Is my benchmark clients benchmark aligned? So benchmark means like what thought, what is the psyche they are having while putting into money in various options available, right? What is the best level of diversification which I can provide? I means like wealth manager, वहां पे मेरे को क्या diversification देना, like what if the bonds is well suited, then I can give the bonds. If mutual fund is suited, then I can give mutual funds. If PMS is well suited, then I will advise PMS, etc., etc. How do I explain my risk management process? It's a very interesting and important aspect when it comes to risk management. No one does, we do. I mean, I'm being, yes, I'm boasting on this. At Three Dots, we do risk management process. We follow the risk management process. Why? Until you are not aware the depth of your client's approach towards money, we cannot advise even a single penny model portfolio to any one of them. Initially, रतन सर ने भी बोला था ना, वॉरेन बफे का एक एग्जांपल कोट किया था, तो वो भी बोलते हैं कि if you are putting one of your leg into the water, then please do not put the other one also. So at least you can have the depth of the water. So that's why always assessing your risk is important. And finally, psyche of trust, it is important. Trust तो बहुत बड़ा factor है.
which is tangible and intangible both in one go. इसके लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है। आई थिंक आप लोगों को ये ट्रस्ट के ऊपर, मुझे वन ऑफ द माय फेवरेट स्लाइड विच आई रियली बैंक अपॉन। सो दिस इज द साइंस ऑफ ट्रस्ट बिल्डिंग। किसी भी पर्टिकुलर यू नो ट्रस्ट मेकिंग प्रोसेस के अंदर ब्रॉडली 5 पॉइंट्स हैं जो कि कवर होते हैं। एंड व्हाट आर दोस? एम्पैथी, वल्नरेबिलिटी, इंटीग्रिटी, competency and credibility. I think these are well known word to each one of us, right? इसमें ऐसा नया कोई वर्ड नहीं है, बट यहाँ पे इसको है ना कंबाइन करके इसको डिजाइन कर दिया है, राइट? बस इसका क्लबिंग कैसे करना है वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले एम्पैथी की बात करते हैं। कैन एनीवन टेल मी नर्स कैन बी रिप्लेस्ड एवर बाय द रोबोट्स इन हॉस्पिटल्स? कैन एनीवन टेल मी नर्स की जगह रोबोट्स ले सकते हैं? एम्पैथी मतलब कहते हैं ना, आई थिंक एम्पैथी का करेक्ट मीनिंग मेरे ख्याल से प्यार हुआ, अफेक्शन, समझना। नहीं, नर्स का जॉब कभी भी नहीं जाएगा। रोबोट्स कभी भी नर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी, एक बार के लिए डॉक्टर्स का जॉब खतरे में है, क्योंकि जितनी भी बड़ी सर्जरी होती है डॉक्टर्स आर देयर, but their team actually does the whole things. एक बार के लिए doctors have got some kind of attention when they are into this profession, but nurse do not have, because the kind of love, the care they give to their patients, right? ये empathy अपने को भी रखनी है as a wealth manager. सच में have harmony in your heart when we are dealing with our clients, right? Vulnerability ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अपने को ये देखना है कि हम उसके लिए कितने ज्यादा वल्नरेबल है। मतलब बस कहते हैं ना कि उसी की सेवा में अपने को जुड़े रहना है, राइट? एंड थर्ड पॉइंट इज इंटीग्रिटी। इसका कोई आसानी नहीं है, इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए, ठीक है? इंटीग्रिटी कैन नॉट बी बॉट, इट्स नॉट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड hence you can see there is one blue bracket which denotes to within you. ये तीनों चीज हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। इन तीनों चीजों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इंटीग्रिटी अगर हमारी खराब है तो वो हमारे अंदर हमेशा रहेगी, और अगर हमारे अंदर किसी के लिए प्यार है तो वो हमेशा हमारे अंदर रहेगा, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, empathy, vulnerability and integrity, these are the 3 things which no one can fetch out, right? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ because nowadays बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, ऑल द रेस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट्स ऑन दिस फोरम। सब लोग बोलते हैं कि हमको जीरोधा ये दे रहा है, पेटीएम ये दे रहा है, ग्रो ऐसा कर रहा है, राइट? एनजे ऐसा कर रहा है, बैंक्स में वो ये सर्विसेज दे रहे हैं। बट ये 3 चीजें अगर आपके पास है ना, तो इनको कोई आपसे नहीं ले सकता। कमिंग टू द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस, competency and credibility. So these are the external factors. These two are the most important and external factors which actually affects us. competency तो रखनी पड़ेगी। अभी जिस चीज की बात अभी हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पहले रतन सर, विनय सर और सभी से, अतुल सर से हम लोग कर रहे थे, प्रेम सर से भी कर रहे थे, तो यही बात हो रही थी कि कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए ही हम लोग इस तरह के फोरम्स को डेवलप करते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी कलीग्स अपडेटेड रहें, राइट? दे आर वेल अवेयर ऑफ द प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, राइट? तो इस तरह के फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए। एंड फाइनली क्रेडिबिलिटी मतलब कहने का मतलब नाम खराब नहीं होना चाहिए, राइट? तो नाम खराब वो कहते हैं ना कि लाइक एक बार हुआ तो फिर उसका कोई दूसरा वो नहीं है। इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अच्छी चीज है, आप एक है ना व्हाट शुड आई से, मंडे को, आपसे 3 दिन बाद मंडे को आप अपने जो भी आपका एडवाइजर है, जो आपको मनी के ऊपर एडवाइस करता है,
Just put 5-6 questions. If that person is answering and giving you kind of solutions to all of your queries, never trust that person. I am very openly saying this thing on this forum. If you throw your queries, your concerns to your wealth manager or advisor, right, and if he or she answers all and give you the solutions of all the problems, that person is not reliable. We are human beings, right? We cannot have all the solutions, available under the sun, राइट सो इसलिए ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर ये 5 पॉइंट्स एज यू कैन सी दैट वेल्थ मैनेजमेंट इज अ बोरिंग प्रोसेस वी हैव टू डू द सेम थिंग एवरी डे एवरी मोमेंट आपने को पैसा डालना है यस डालना है आज मेरे से कोई पूछ रहा था कि निफ्टी 19,700 पे क्लोज हुई है पैसा डालें क्या शी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिनाउंड स्कूल बोलती है ऋषभ पैसा डालू क्या मैंने कहा हाँ डालना है तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी डॉटर की एज क्या है बोलती है कि शी इज 24 वो एडवोकेट है आई कैन नॉट टेक द नेम मैंने कहा कि है ना उनको उनको बहुत दुख होता होगा कि उनका जन्म उस साल में क्यों नहीं हुआ जब निफ्टी 3,000 पे थी या 4,000 पे थी या 5,000 पे थी तो बोले ऐसा थोड़ी होता है तो मैंने कहा बस फिर अब से 10 साल बाद किसी का जन्म होगा तो उस वक्त निफ्टी 25,000 पे होगी 30,000 पे होगी So wealth management says do the things daily with discipline. So there is no particular science into it, right? Yes, methods are there, processes are there, right? And we need to prevent ourselves for the poor performance, as you can see the 5 P's on this slide. Yeah. So it's again how we do it. As you can see that we meet our prospective clients, we do data collection, goal setting, current analysis. So when we talk about this meeting, it's a very elaborated one. आप बिलीव नहीं करोगे मैं किसी भी क्लाइंट के यहाँ जब जाता हूँ पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार मैं ये तक भी देखता हूँ कि उसके घर पे पेंट कौन से कलर का हो रखा है ड्राइंग रूम में और उसके लिविंग रूम में राइट उसकी कार में टायर कौन सी कंपनी के है मतलब कहने का मतलब मेरा मकसद ये नहीं है कि टायर उसको एमआरएफ का लगाना है या पोलो का द ऑब्जर्वेशन try to try to analyze the behavioral aspects of that particular client right वो किस तरह का चाय हमको पिला रहा है वो किस तरह का कॉफी हमको पिला रहा है वो सब चीजें हमको एनालिसिस करना पड़ता है वी आर नॉट बीइंग जजमेंटल व्हाइल सेइंग दिस थिंग बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ राइट तभी जाकर के हम है ना नेक्स्ट वाला जो स्टेप है ड्राफ्ट वो हम ड्राफ्ट बना पाएंगे राइट और उसका एग्जीक्यूशन करेंगे और उसके बाद उसको उस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की राह पर उसको स्टार्ट कर देंगे दिस इज अ वन स्टॉप नो दिस इज Wonderful slide. it goes like this it goes like this ये अपने को करते ही रहना पड़ेगा हर 3 महीने में हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं दिस इज अ प्रॉमिस दिस इज द पॉलिसी we have got in our company every 3 months we meet our client having said that it doesn't mean that we ask our clients to have a look on their return which is generally called CAGR compounded annual growth rate no why we meet so that we are updated with their ups and downs हमको उनके अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता होना चाहिए अगर उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं तो हमको पता रहना चाहिए राइट सो दैट अकॉर्डिंगली we can implement that changes into the portfolio there are a lot many things other than investments right so that's why it is very much important yes risk profiling I was actually talking to you all on this that risk profiling मैं इसको है ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ so you can see the link so ये हम लोगों का कंपनी का आईटी सिस्टम सपोर्ट है इस लिंक को हमने इधर प्लेस किया है एंड while clicking it you can see one dummy this thing and okay I hope you can see all this Yeah sir it is we are seeing नहीं दिख नहीं रहा क्या one second because it's a different link so we need to share it कोई नहीं मैं उसको उधर कर दूंगा
Okay. You share. I hope you can see this risk profiling. Is it? अब तो Ratan, हाँ, yes, Ratan? yes, sir, it is Okay, great. seeable. So, देख रहे हैं हम. yes, How old are you? This is the first. correct, exactly. Yeah. So this is a very important slide, right? And it actually gives us the psyche, you know, why clients are actually investing with us and what are their goals, what are their dynamics, their biologies at home, their family members, right? Age, goal. I mean, how they are behaving when markets go up or down, right? What they think when, you know, their principal, the money which they have invested is at risk. What would be the thought, right? And these are the questions which needs to be discussed one by one with our client. It should not be like, you know, form filling exercise. We actually do that, right? Why? Because markets go haywire like this. इसराइल और हमस आएगा, रशिया यूक्रेन आएगा, चाइना +1 स्टोरी चलेगा, अप्रैल में सेंटर में इलेक्शन है, अभी स्टेट के इलेक्शन है. फंडामेंटली हमारे पोर्टफोलियोज इंटैक्ट रहने चाहिए, राइट? वो इंटैक्ट कैसे होंगे? जब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इन प्लेस है एंड इट हैज गॉट सम प्रोसेस इन इट, राइट? तो सब चीजें इसके अंदर यहाँ पे आपको दिखेंगी कि किस तरीके से, यू नो, हर क्वेश्चन का जवाब क्लाइंट दे रहा है. और जब क्लाइंट ये सब चीजें करता है ना, तो क्लाइंट को बहुत मजा आता है कि वो एक्चुअली आपके साथ ये सब चीजें शेयर करता है. एंड आप इसको जब करेंगे ना, तो आपको वाकई में लगेगा कि ये बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है. जनरली पीपल डू नॉट डू इट. हमको एचडीएफसी बैंक में इस तरह का एक प्रोफाइलर मिला करता था, बट वो एक फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज होती थी. हम उसको क्लाइंट को दिखाते जरूर थे, हम खुद ही टिक करते थे, 1 सेकंड भी नहीं लगता था, साइन करा करके लेकर के आ जाते थे. बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट शुड बी इन अ क्लाइंट्स पोर्टफोलियो फाइल, so that, as I said, that 1 year or 2 year down the line, you know, they can always check, you know, what risk profiling or risk barometer they are in, right? So this is what all about, you know, risk profiling. तो पीछे उसमें सर अनम्यूट करिए अपने आप को. Yeah, sorry. Yeah. So this was about the risk profiling. So this is the next slide, which contains the concepts which are very much important. Investment planning, protection planning. Protection means, like, you know, how we are covered. अभी गाड़ी का सब लोग चालान के डर से अपना कवर कराते हैं, अपना इंडिविजुअल कवर नहीं जनरली लोगों का होता. आफ्टर 2020 द ग्राफ है शूट अप लाइक दिस. बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, बहुत सारे लोगों ने टर्म इंश्योरेंस करवाए. टर्म इंश्योरेंस को नॉर्मल इंश्योरेंस से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, ये चीज हमको आगे बढ़ के लोगों को बतानी है. मिस सेलिंग सबसे ज्यादा यहीं पे हो रही है. इसी की वजह से इस पूरी कम्युनिटी को एक अलग नजरों से भी देखा जाता है, राइट? एस्टेट प्लानिंग, आई थिंक रतन सर इसी के बारे में ही बात कर रहे थे कि सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर भी एक सेशन हुआ था, right? और टैक्स प्लानिंग, आई थिंक यू ऑल आर the kind of god in tax planning. So tax planning is also an integral part of wealth management, right? So these are the common misconception about wealth management कि है ना, रिच लोगों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट बना है. कई लोग बोलते हैं कि सर ऋषभ जी मेरे पास तो वेल्थ ही नहीं है, आप मैनेज क्या करोगे? सो इट्स नॉट लाइक दैट. One can invest 1,000 rupees on a monthly basis, right, to create his or her wealth on a gradually. Insurance planning
is financial planning. Yes, tax planning is financial planning. मतलब बहुत सारी मिसकंसेप्शन इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज हम अपने डायलेमास में ही हमेशा रहते हैं और उन डायलेमास में हम बाहर नहीं निकल पाते. आई एम यंग टू थिंक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. मैं एक लड़की से मिला आपसे ऑलमोस्ट 40 द नेम ऑफ दैट कॉलेज. पानी जो है क्या निकाल. आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने अभी हमारे साथ 14-15 महीने पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए. नाउ हर मदर कॉल्ड मी बिफोर दिवाली की है ना, उसका अभी बहुत सही तरीके से सब चीजें चल रही है. यंग कुछ नहीं होता, राइट. द अर्ली वी स्टार्ट द बेटर इट इज. कंपाउंडिंग को आई थिंक इस फोरम पे बात करना भी गलत होगा. कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कंसिडर्ड टू बी द 8th वंडर ऑन दिस प्लेनेट, राइट. कंफ्यूज फाइनेंशियल प्लानिंग. अभी क्या होता है ना कि लाइक बहुत सारे मुंबई से दिल्ली से ना वेल्थ मैनेजर इधर जयपुर आते हैं एकदम बड़े बड़े जार्गन्स यूज करके वेल्थ मैनेजर्स बन करके और क्लाइंट्स को ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. वी शुड नॉट डू दैट. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अनकॉम्प्लिकेट द थिंग्स, राइट. So this is how these are certain questions which always carried in mind: qualifications, experience, the approach towards financial planning. How much do I pay for such services? Actually, there is no fee to it, right? The company gives us the fee, as we have already empaneled with the companies. Are we regulated? Yes, we are regulated by SEBI, Security Exchange Board of India, right? Can I have it in writing? Writing में क्या चाहिए? Process का writing दे सकते हैं, return का writing कहीं नहीं मिलता, right? So these are certain things which generally covers into financial planning. And finally, we come to the integral part of wealth management, which says that what all instruments are there. इसकी जगह हो सकता है आपके दिमाग में 5 और products हो, right? But broadly, we have covered up like fixed deposits, government schemes like PPF, KVP, mutual funds, stocks, bonds, NPS, gold, silver, real estate, commodity, life insurance plans, and currencies. So these are the strategies we generally consist in our portfolios. अब इसका कौन कौन सा कितना कितना पोर्शन हमको क्लाइंट को देना है वो हम अब से पिछली 17 स्लाइड्स में लर्न कर चुके हैं. लेकिन ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली होते क्या है, राइट? इनका प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, राइट. इसके जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे को पता होने चाहिए, राइट. सो फ्रॉम हियर आई वुड रिक्वेस्ट माय co-founder Kamlesh Mandovra to take it from here and so that he can very well explain all these things. So Kamlesh was also managing the wealth branch in ICICI Bank as an investment counselor. So he has got a very deep knowledge on the products aspects. And so Kamlesh, from here you can take it further. Yeah. Stop here, right? यस सर. कमलेश जी प्लीज अनम्यूट करें. सर कमलेश जी अनम्यूट कर लें. गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग. तो लाइक अभी तक सबने जो डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट all the processes we follow as an investment advisor, as well as which products we do. मतलब like investments की बात तो हो गई कि like we follow the processes, risk profiling करके, as well as we do understanding the necessity, the requirement of the investor. मतलब मेरे पास पैसा है लेकिन उसको कैसे करना है. So all those processes we do before recommending any of the investment. So we try to match up के जो आपके requirement है. So the best suitable options, like if you have money for just 7 days also, so we have the instruments for that कि आपको 7 दिन के लिए भी investment करना है, as well as you have the planning of long term. So we recommend basis on the requirement of that. So what all instruments are there and what we can recommend to our investors, मतलब as a
एडवाइजर आप सबके लिए। तो सो उन प्रोडक्ट्स के बारे में जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी डू। सो बेसिकली जनरली म्यूचुअल फंड्स में आजकल जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, एंड देयर आर सम थिंग्स के लाइक आजकल लोग है ना ये सोच के कि मुझे जरूरत नहीं है, मैनी ऑफ अस आर ड्रेड द थॉट ऑफ मैनेजिंग आवर ओन इन्वेस्टमेंट। वी थिंक कि क्यों मैं किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट को या कोई फीस के लिए है तो व्हाई शुड आई पे द फीस, एंड व्हाई आई नॉट इन्वेस्ट माई सेल्फ, मतलब मैं क्यों नहीं अपने हिसाब से इन्वेस्ट। सो वी से कि लाइक एज एन इन्वेस्टर जब आप एक हायर करते हैं एक घर बनाने के लिए एक आर्किटेक्ट को, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप ऑनलाइन के पोर्टल से कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग इज टू गो विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू डू नॉट हैव। और दूसरा ये है कि आप अगर अगर अपने कोर जॉब से हट के अगर यू विल try to invest into mutual funds or any other investment, then there are high chances कि क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतना, so there are high chances that one can make mistakes. So professional fund management है जिसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, that is mutual funds. So that is mutual funds. So I will not go through that what are mutual funds and all, but various strategies for different investors are there. Like we have corporate and business houses, इनके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। देर आर बाकी कॉर्पोरेट्स के साथ साथ हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि लाइक फॉर ऑल इन्वेस्टर्स या कॉर्पोरेट्स भी जो लंबे टाइम के, लाइक हाउ वी से कि फॉर कॉर्पोरेट एंड बिजनेस हाउसेस, बिकॉज देर आर मेनी ऑफ द टाइम्स दे हैव द लिक्विडिटी, उनके करंट अकाउंट के अंदर बैलेंसेस हैं, या मतलब कोई ट्रस्ट है किसी के लिए भी है, सो एज लो एज 7 दिन के लिए भी इफ दे वांट टू पार्क, and right now the money market instruments which are offering 6.5-7% kind of returns, so they can assume that that kind of returns are higher than a fixed deposit for that short duration also they can get. So or the best part is the liquidity. जब भी आप इन्वेस्ट करें इन लिक्विड और डेट फंड्स के अंदर से, द नेक्स्ट वर्किंग डे यू कैन गेट द मनी. Partial investment redemption is allowed even if someone invests 1 crore or rupee and want to redeem just 10,000 rupees, he or she, the company can get it back. The exposure majorly in debt funds is into T-bills, certificate of deposits, GSEC, SDL, A rated, A plus rated, मतलब short term जो 1 साल का पेपर होता है, A plus rating कैटेगरी के पेपर्स में इन्वेस्टमेंट भी do. इसके कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं that I'll share, as well as for all investors. All investors means like any of the investor who is willing to invest for more than 1 year, 2 year, then we recommend to go for equity in and as per risk profiling also we recommend. तो in equity के कौन से funds होते हैं क्या? So these are the benefits of the mutual funds. Liquidity, 2 दिन में पैसा वापस आ जाता है आपका जब भी इन्वेस्ट किया है, 2 working days. पार्शियल रिडम्पशन है, एक्सपोजर टू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड वेरियस सेक्टर. आज अगर हमें लग रहा है कि टेक्नोलॉजी काफी गिरा हुआ है, हम 2 साल के लिए टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू हैव द ऑप्शन. यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू फार्मा स्टॉक्स, यू हैव द ऑप्शन. You have the liberty to invest into any of the sectors, banking, pharma. आगे आने वाले टाइम के लिए जिस तरह से PLI एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, तो यू कैन इन्वेस्ट इनटू मैन्युफैक्चरिंग themes also, as well as any of the mutual fund can be aligned with any of the goal. आज अगर कोई अर्ली एज में अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना चाहता है, he can invest. Anyone who is planning to invest for his or her daughter's or son's education, that can be aligned with any of the goals. So these are there were 2 things. I will just share the model portfolio also. See, these are the model portfolio. I'll just share. Okay.
So this is the model portfolio. Like we have recommended anyone who is willing to invest for a shorter duration. This is the horizon for 1 to 3 months. So from our softwares, we basically generate this kind of के आपका exposure कहाँ होगा, कितना होगा, ultra short term short, ये कुछ companies के नाम हैं जहाँ investment. So इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है कि आपका जो भी पैसा है वो एक्सिस बैंक की सीडीज में मतलब सर्टिफिकेट और डिपॉजिट एफडी के अंदर 5.7% इन्वेस्टमेंट हो गया, नाबार्ड के अंदर हो गया. सो दिस वे डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशन टू डिफरेंट डिफरेंट short term parking के लिए different instruments it will be there. So it will not be parked in a single company or in a single FDs or anything. So it will be very diversified, well diversified, and as low as for 7 days also. So now coming back to the presentation, yeah. So similarly for equity होता है कि like स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाना शेयर मार्केट में, बिकॉज पैसा लूज हो जाता है उसके अंदर. सो हाउ म्यूचुअल फंड्स आर डिफरेंट, दैट वी जनरली मेक देम अंडरस्टैंड. क्योंकि स्टॉक्स के साथ जनरली ये होता है कि आप कई लोग बिना किसी रिसर्च के, मेरे किसी मित्र ने कह दिया या मेरे किसी जानने वाले ने कह दिया, उसके बेसिस पे दे डू द इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड देन दे इन्वेस्ट रेदर देन अंडरस्टैंडिंग दैट कि मैंने वो स्टॉक के अंदर लगाना है पैसा या नहीं है. लाइक कुछ टाइम के पहले अगर नाम सुने, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, दे फ्रॉम 1 rupee 2 rupee they increase to up to 200 rupees, multifold kind of returns है. बट आज अगर जिन्होंने भी उसको हायर लेवल पे बाई कर लिया, वो आज 10 रुपए 12 रुपए के ऊपर वापस ट्रेड करना है. सो दिस आर दी बेसिकली रीजंस जहां पे लोगों का एक्सपीरियंस खराब होता है विद द स्टॉक्स एंड ऑल. But with mutual funds, because it is a very well diversified, so this rumors can be avoided, and if one person stays invested for a longer horizon, then he can get a decent kind of goal based returns. तो जो उन्होंने सोचा उतना expectation as per the market performance, the returns can be generated. So according to behavioral finance theory also, investors are irrational by nature. Their investment behavior is not backed by thorough research. तो ये point जो cover किया था, this is the reason के investment का जो उनका experience है with stock market is not very good. So basically in mutual funds we have different kind of classifications. जहाँ पे open ended funds हैं, closed ended funds है, open ended जहाँ पे जो schemes running है, there one person can invest anytime and can exit anytime. Closed ended funds basically are closed in nature. One can invest on a particular time. उनसे निकलना भी एक प्री डिसाइडेड डे पे पहले से फिक्स होता है. बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल, पैसिव फंड्स एंड एक्टिव फंड्स. सो पैसिव फंड्स धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में. अभी इनका परफॉर्मेंस एज सच दे आर नॉट दैट मच पॉपुलर इन यूएस. इंडियन इक्विटी मार्केट इज डिफरेंट कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कंट्रीज इक्विटी मार्केट. सो पैसिव फंड्स आर दोज फंड्स जहां पे फंड मैनेजर जस्ट एक इंडेक्स का रेप्लिका बना लेता है एंड they do not do any different buy and sell as in active funds. So active managed funds के अंदर basically the fund manager जो mutual funds को manage कर रहे हैं, तो they basis on their research, basis on their process, they sell and buy stocks time to time to optimize the return and to beat the index. And similarly there are based on investment objective, there are debt funds, equity funds, hybrid funds. तो डेट फंड्स आर दोस फंड्स जो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए हम ज्यादातर यूज में रिकमेंड करते हैं, एज वेल एज लॉन्गर टेन्योर के लिए भी, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर है. इक्विटी इज इनटू स्टॉक मार्केट्स एंड हाइब्रिड फंड्स आर दोस फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इनटू गोल्ड आल्सो, डेट एंड इक्विटी आल्सो. सो दे आर कंसीडर्ड एज हाइब्रिड बिकॉज दे इन्वेस्ट इनटू बोथ गोल्ड एज वेल एज डेट एंड इक्विटी एज वेल एज एनी अदर commodity also. So these are the investment modes and tools in mutual funds. जहाँ पे modes हैं, हम एक साथ पैसा डाल सकते हैं. Monthly investment SIPs जो systematic investment plan के तौर पे we can invest, and SIPs are basically pre-decided amount on a pre-decided date. So tools are SIP, systematic investment plan, systematic transfer plan, and systematic withdrawal plan.
So SIP के अंदर we invest a fixed amount on a fixed date. STP is systematic transfer plan. This is for कि आपके पास पैसा है लेकिन आप मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट यू डू, यू पार्क इनटू एनी ऑफ द लिक्विड और डेट स्कीम ऑफ एन AMC म्यूचुअल फंड कंपनी, और वहां से हम पीरियडिकली, मतलब इट कैन बी वीकली, इट कैन बी डेली, और इट कैन बी मंथली ऑल्सो. सो इट कैन बी पीरियडिकली, इट विल बी ट्रांसफर टू एनी ऑफ द इक्विटी स्कीम्स. सो बेसिस इसका बेनिफिट ये है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में रहता है, तो कई बार ये होता है कि वो पैसा आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं. सो वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं रहे और आप इक्विटी में भी इन्वेस्टेड रहे, तो उसके लिए आप मार्केट आपको वॉलेटाइल दिख रहा है, जैसे अब रेडिकेट करने के लिए सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यूज करते हैं. सिस्टमेटिक विड्रॉल बेसिकली, अगर जब हम किसी का प्लान करते हैं रिटायरमेंट के हिसाब से, कोई ऐसा चाहता है या कोई एक फिक्स इनकम चाहता है कि यार मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ फिक्स इनकम भी आती रहे, सो वी रिकमेंड इन दोस केसेस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. सो इसमें कैसे होता है, जिस तरह से SIP के अंदर हम हर महीना पैसा एक फिक्स अमाउंट फिक्स डेट को देते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल के अंदर रेदर देन डिविडेंड हमारा जो पैसा है वो रेगुलर हमारे पास फिक्स डेट को अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता रहेगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. So these are the different risk parameters of mutual funds. So selection of fund basis on the risk profile, this way we do. Low risk, low to moderate risk, तो हर म्यूचुअल फंड स्कीम को एक रेटिंग दी जाती है on this risk parameter. So higher the like if any investor is with the high risk profile, then the recommendation is into very high risk fund, as well as low risk funds can be liquid funds, your overnight funds जहां पे risk volatility नहीं होती funds के अंदर, and any investor can invest into those. So the higher the risk, higher the returns, lower the risk, lower the return. So riskometer again जो बताया था, help align risk the fund carries with the risk profile of the investor. This I explained there also. So we according to the risk profile हम इन्हीं फंड्स के अंदर से जो जिस फंड का रिस्कोमीटर जो सजेस्ट करता है वो उनके पोर्टफोलियो के अंदर हम ऐड करने का रिकमेंड करते हैं. सो एज एन एडवाइजर अगर आप चाहें तो ये एक पैरामीटर देख सकते हैं. देन दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट, ऑल अबाउट कि हम रिस्क किसी भी तरह का जनरली, मतलब लाइक आप सबने इंश्योरेंस किया होगा, तो इंश्योरेंस just to elaborate that, so insurance is what a risk management. आप अपना रिस्क एक प्रीमियम देके किसी और पे ट्रांसफर कर रहे हैं. So when you pay a premium of car insurance to your general insurance company, so at a fixed premium उस पर्टिकुलर सम assured का रिस्क वो कंपनी ले रही है. तो अगर मैं 15,000 रुपए में एक कार का इंश्योरेंस कर रहा हूँ 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए, सो दैट 5 लाख तो उस कार को कुछ होता है, तो 5 लाख विल बी रियम्बर्स्ड. सो दैट इज अ रिस्क ट्रांसफर. सो दैट वे यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू समवन. तो सिमिलरली दिस रिस्क इज लाइफ इंश्योरेंस में ये रिस्क हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं. होम इंश्योरेंस वी डू, जहां पे बर्गलरी है, फायर है, इस तरह के सारे इंश्योरेंस हो जाते हैं. ग्रुप मेडिक्लेम किसी भी कंपनी के अंदर जहां पे 25 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं वहां पे हम ग्रुप मेडिक्लेम रिकमेंड करते हैं. मरीन इंश्योरेंस एक्सपोर्टर्स और उन सब इंपोर्टर्स के लिए जिनका कंसाइनमेंट बाहर जाता है एक्सपोर्टर्स के लिए. फायर इंश्योरेंस एंड अदर जनरल इंश्योरेंस. सो वी हैव अ पोर्टल फॉर दैट, जहां से वी टेक द कोटेशन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड देन वी do this. So these are the different kind of life insurance instruments. Life insurance के अंदर अलग अलग जो हैं guaranteed term plan है, which is a very important tool of financial planning, कि जहाँ पे हम पैसा वेल्थ क्रिएट करने के लिए जहां हम एक तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से जो प्लान किया है वो प्लान कहीं ना कहीं किसी इवेंट मिस हैपनिंग की वजह से रह जाए. तो इसीलिए वी रिकमेंड दिस इंश्योरेंस प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जिसके अंदर टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है. सो टर्म इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली एज पर द एनुअल इनकम ऑफ इंडिविजुअल
the income it is a income replacement. So this is the annual income of the individual, which is 20 times generally is taken. तो किसी की annual income is 10 lakhs, तो then उसका 20 times, that is 2 crore का insurance cover the person can take. So it is completely on the age. Premium is basis on the age. So अगर किसी की annual income कम है तो उसमें insurance cover, term insurance नहीं मिलता है. Other are unit link insurance plan, traditional investment plan. Traditional के अंदर nowadays there are many guaranteed plans also के जहाँ पे 6.7, 6.8% का guaranteed IRR they are offering. So these are the health insurance. Health insurance के बारे में डिटेल है. आजकल जो covers हैं nowadays there are many new kind of plans where they even include the dental treatment. तो वहाँ पे dental treatment का up to rupees 10,000 का reimbursement, air ambulance, global cover 6 crore तक का global cover is also available. मतलब हम इंडिया में रह के बाहर इलाज कराने जा सकते हैं. And मतलब आप लोगों को सबको है, but yeah, for the people के like up to 1 rupees this rebate also available. Top up health plans, these are very popular कि अगर कोई कंपनी के अंदर किसी के पास already mediclaim है, so they can take the top up plans or accidental health insurance for them. So we also recommend this general insurance where you have the car, travel, home, lifestyle. ये मतलब बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना has also started. Cyber liability insurance, professional liability insurance. So any of the companies which are into web solution or any service provider, the SaaS companies, they also need this cyber liability insurance and all. तो ये भी करते हैं. Then sovereign gold bonds, which are nowadays very. कमलेश जी, yes sir, प्लीज ये प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें यहाँ पे. sure. इफ यू कैन एक्सप्लेन. हाँ, प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में मैं सर एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर Yes, sir. प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस बेसिकली है ना, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे क्लाइंट मतलब उनकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर देयर इज अ रिस्क कि उनके जैसे इसमें सबसे बड़ा जो है ये कवर डॉक्टर्स लेते हैं. जैसे तो कोई सर्जन है, उनके किसी सर्जरी की वजह से किसी पेशेंट की डेथ या कुछ ऐसा हो जाए कि वो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दें. So in those cases, this professional liability insurance is being provided. इंडेमनिटी टाइप से हो गया. इंडेमनिटी टाइप से हो गया. Yes. And this is professional indemnity insurance. So this is open for the chartered accountant or tax professionals also. Sir, tax professional के लिए अभी नहीं है ये. अच्छा. लेकिन ये because we also carry the risk. कभी भी हमारा क्लाइंट कभी भी किसी भी बात के लिए हमें चैलेंज तो कर ही सकता है कि सर मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपने रिटर्न भर दिया, मैंने ऐसा नहीं मैंडेट दिया था, आपने वो मैंडेट पे वर्क कर दिया. करेक्ट सर. So that is not covered under मतलब this policy. As of now it is. Tax professionals or chartered accountants are not covered under this policy. Yes sir, they are not covered. Okay. Just a sec. So these are basically different. So as of now it is not there. Also I will check with few of the companies because जिसके साथ हम अभी कर रहे हैं उनके पास ये नहीं है. So this professional liability insurance was for one of the software company also, जहाँ पे उनके US based clients हैं जिनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो they are also asking for this cyber liability insurance also. So they ask for this insurance mandatorily. जी. And then मतलब next page, so what we were discussing was sovereign gold bonds, जहाँ पे minimum 1